Dear learner, in earlier video we have seen the what are the objectives and what kind of financial statement includes what kind of statements that we have seen in earlier video. Now in this video we are going to see about the format of balance sheet that is followed by company, each and every company of India, right? So format of balance sheet, first of all we are supposed to see that we are not preparing the balance sheet as horizontal format, we are preparing the balance sheet in vertical format. So on the upper side we are recording equity and liability, and under the equity liability under the lower side we are recording all the assets of the company. Equity and liabilities, there are total three main heads. Shareholders fund, in which we have three subheads: share capital, reserve surplus and money received against share warrant. सेकेंड मेन हेड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. शेयर एप्लीकेशन मनी हमारे पास आ गए लेकिन अलॉटमेंट करना बाकी है, तो इससे वैसे सर हमें यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे. नॉन करंट लायबिलिटीज विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हमें आफ्टर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स मतलब मोर देन 12 मंथ्स के बाद हमें उसको रिपे करना होता है. दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि हमने किसी भी बैंक के पास से लोन ली है, हमने डिबेंचर इशू किए हैं, हमने बॉन्ड इशू किए हैं, दैट ऑल कवर्ड अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, दिस ऑल आर लॉन्ग टर्म प्रोविजन इंक्लूड्स से फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी हो गया, एम्प्लॉयज पीएफ प्रोविडेंट फंड हो गया, वो सारी कहाँ पे आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा. अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटीज है जो आपको पे करना बाकी है, दैट ऑल थिंग विल बी कवर्ड अंडर द नॉन करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वॉट एवर लायबिलिटी यू आर हैविंग फॉर लेस देन 12 months, दैट ऑल द लायबिलिटीज आर कंसिडर्ड अंडर द अंडर द करंट लायबिलिटीज. नंबर वन इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गई. ट्रेड पेबल्स इंक्लूड टू थिंग्स, creditors and bills payable. Other current liability, outstanding expenses, advance income, these all are called other current liabilities. Short term provision, provision for tax, proposed dividend, these all are called as short term provision. And at the end you are supposed to do the total of amount of all the items, all the heads, right? So this is the equity and liability side. And उसके नीचे ही आपको रिप्रेजेंट करना है asset. Asset has two major head. One is non-current assets, which is for the longer period of time, and second one is current assets. Under the non-current assets we have fixed assets, tangible, intangible, capital work in progress, intangible assets under the development. These are the fixed assets. Non-current assets under which we have fixed assets. Fixed assets के अंदर भी there are four kind of assets. One is tangible, intangible, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. मान लो आपका कोई भी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मान लो आपका कोई भी गुडविल रिगार्डिंग या तो पेटेंट रिगार्डिंग या तो ट्रेडमार्क रिगार्डिंग आपका जो भी वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. नॉन करंट एसेट, जैसे हमने कहीं किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी और सब्सिडियरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हो. डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया हो. अदर नॉन करंट एसेट्स, एंड यहाँ पे आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर डिस्काउंट विच इज़ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स है दैट इज कवर्ड अंडर द अदर नॉन करंट एसेट्स. इसके बाद सेकंड मेजर हेड है करंट एसेट्स. करंट एसेट्स आर फॉर द लेसर देन 12 months एंड दैट इज इजीली कन्वर्टेबल इन कैश. करंट इन्वेस्टमेंट विच इज़ फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक इन ट्रेड. ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड टू थिंग्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स. अदर करंट एसेट्स में आएगा एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी अदर करंट एसेट्स में. सो दिस इज अ फॉर्मेट एज पर Schedule 3 of the Companies Act 2013. Thank you.